I logged in. Hello and a very warm welcome. Thank you, Komal and Anita, for joining in. Let me very quickly recap what we did in the last session because it has been a short break after a while since then. So, in our last session, we explored one of the most powerful parts of awakening the giant within, that is the impact of life metaphors. We uncovered how the simple phrases use phrases like life is battle, love is pain, or people can't be trusted. They are not just words. They are the belief systems that silently shape how we think, how we feel, and how we live. This is what we discussed in the last session. And today we are going to read a very powerful, yet another powerful, section of this chapter only, that is global metaphors. I would say the deep rooted metaphors that shape how we see life, love, work, relationships, people, everybody. Because what you believe, the world silently controls how you live. आप जो वर्ल्ड के बारे में बिलीव करते हो साइलेंटली आपकी लाइफ वैसी ही बन जाती है. हाउ वी सी द पैटर्न्स coming back in our lives, the patterns we fear come back in our lives. Why? Because we silently, बिल्कुल बेशक एकदम स्लाइटली भी किसी चीज में बिलीव करते हैं, वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है. ठीक है, let me very quickly start sharing the screen and let's read together. What does Tony Robbins has to share on this? Global metaphors. Remember my ragging CEO? The same day I made the distinctions that led to the creation of the technology of transformational vocabulary. I discovered the value of what I call global metaphors. I knew that my CEO used words that intensified his emotions, and I wondered what made him feel those negative feelings in the first place. And as you and I already know, everything we do is based on the state we are in, and our state is determined by our physiology and the way we represent things in our mind. So I asked him why he was so upset, and he said, well, it's like they have us in a box with a gun to our heads, on our heads. Do you think you would react rather intensely if you believed or represented in your mind that you were trapped in a situation like this? It's not hard to figure out why he was in a rage. Now, for many years without realizing it, I had helped people change how they were feeling by interrupting their patterns and changing their metaphors. I just wasn't aware that what I was doing. That span of the power of creating labels. Once you have a label for what you do, you can produce a behavior consistently. So I'm working with somebody one on one, and she has been very consistent since very long. But towards the end of her program, she has become a little lazy. So today only, just before the session, I texted her. She's supposed to give me a you know uh, update on what she has done so far by 11 a.m. in the morning, and she has not done that. It was 1 p.m. So I texted her that you have been super consistent, and I truly appreciate that. We must follow the momentum that we have built over these many days.
Let's get back on track and quickly do the work and share. She loved how I told her. And now what it did was it awakened the better parts of her very quickly. And she shared, like, abhi abhi uska message aaya that this is 1:35, that this is what I have done so far. Even if she would not have done it with a message like this, she did it and she shared. That is the power of words you choose. That is the power of labels that you give anybody. I turned to the CEO and asked, "What color is the squirt gun?" He looked at me in a puzzled state and said, "What?" I repeated the question. "What color is the squirt gun?" This immediately broke his pattern. In order to answer my question, his mind had to focus on a weird question, which immediately changed his internal focus. When he began to picture a squirt gun, do you think his emotion changed as a result? You bet. He started to laugh. You see, virtually any question we ask repeatedly, a person will eventually entertain to answer to an answer to. And when they do answer your question, it changes their focus. For example, if I tell you over and over, don't think of color blue. What color do you think are you going to think of? The answer obviously is blue. So if I tell you you have a pink hair in your head, what will you do? काई काई ढूंढने लग जाओगे पिंक. You will not think of कि अरे मेरे पास तो पिंक हेयर है ही नहीं. Right. So whatever you think about, you will feel. Getting him to think about the situation in terms of skirt gun, I immediately shattered his disempowering imagery and thereby changed his emotional state in a moment. What about this box? His box. I handled that in a different way because I knew he was competitive. I simply said, as far as this box idea is concerned, I don't know about you, but I know no one could ever build a box big enough to hold me. You can imagine how quickly that destroyed his box. The man regularly feels intense because he is operating with an aggressive metaphor. If you are feeling really bad about something, take a quick look at the metaphors you are using to describe how you are feeling and why you are not progressing or getting what is getting in the way. Often, you're using a metaphor that intensifies your negative feelings. When people are experiencing difficulties, they frequently say things like, "I feel like the weight of the world is on my back," or "there is this wall in front of me and I can't just break through." But disempowering metaphors can be changed just as quickly as they were created. You choose to represent the metaphor as being real. You can change the metaphor just as quickly. So, if someone tells me that they feel that they have the weight of the world on their back, I will say, "Set the world down and move on." They will give me a funny look, but sure enough, in order to understand what I just said, they will make a change in their focus and therefore how they feel immediately. Or if someone tells me that they just can't make progress, that they keep hitting a wall, I tell them to stop hitting it and just drill a hole through it, or climb over it, or tunnel under it, or walk over it, open the door and go through it. खत्म हो जाएगा ना उसका एकदम पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा. सो इफ यू कीप ऑन टेलिंग मी नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, अच्छा छोड़ ना, वो कर ले, करके तो देख. The moment I say with the just like Tony Robbins said कि put the world down, don't carry the world on your shoulder, put the world down and then move on. एकदम पिक्चर में क्या आता है कि हाँ शोल्डर से कुछ उठा के नीचे रखा और चल पड़े. That is how we think. We picturize everything. We visualize every single thing.
Good afternoon, Madhulika. Thank you for joining in. You would be surprised, as simplistic as this sounds, how quickly people will respond. Again, the moment you represent things differently in your mind, in that moment you will instantly change the way you feel. If someone tells me I'm at the end of my rope, I will say, set it aside, come over here. Often people talk about they feel stuck in a situation. You are never stuck. You may be a little frustrated. You may have you may not have clear answers, but you are not stuck. The minute you represent situation of yourself as being stuck, though, that's exactly how you will feel. You must be very careful about the metaphors we allow ourselves to use. Be careful of the metaphors that other people offer you as well. Recently, I read an article about the fact that Sally Field is now turning 44. The article said she's beginning to start down the slippery slope of middle age. What a horrible and disempowering way of representing your expanding wisdom. If you feel like you are in a dark, then simply turn the light on. If you feel like you are drowning in the sea of confusion, walk up the beach and relax on the island of understanding. I know this can sound juvenile, but what's truly juvenile is allowing ourselves to unconsciously select metaphors that disempower us on the consistent basis. We must take charge of our metaphors, not just to avoid the problems, metaphors, but so that we can adopt an empowering metaphors as well. We have seen multiple people, कोई भी किसी से भी बात कर लो, किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख है और वो दुख बहुत ही गंदे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरी तो जिंदगी में ये हो गया, मेरी जिंदगी में वो हो गया. Cribbing, crying and doing saying words that are absolutely disempowering. The only way to shift that is start choosing the better metaphors. Start using empowering vocabulary. That's it. अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है, and if I say कि I am in fury, just like the example stated in this chapter itself. Fury is a very harsh word, and when you say I am slightly disheartened, I am slightly disappointed with what you did or said, it makes whole lot of a difference. The feelings don't change, as in word के मतलब से, but how you feel shifts immediately. क्योंकि वो slightly हो जाता है. For example, whatever you said was a stone on my heart. हाय कितना भारी हो गया ना. But what you said was like तो कई लोग कहते हैं ना कि अपनों का तो फूल मारा हुआ भी पत्थर लग जाता है. वो भी भारी हो जाता है ना. It's like deeply connected to them. So yeah, वही मतलब हुआ ना कि फूल भी पत्थर लग रहा है in the sense कि मतलब इतनी सॉफ्ट सी चीज होती है, फूल को भी पत्थर बना दिया आपने. और पत्थर हम्म, कितना हार्शली लगेगा, जस्ट इमेजिन. और वो उतना ही हार्श हो रहा होता है. yeah, We sure. should reflect on the kind of language we use and the tonality we use. Once you become sensitized to the metaphors you and other people use, making a change is very easy. All you need to do is ask yourself, is this what I really mean? Is this really the way it is? Or is this metaphor incorrect, inaccurate? Remember, anytime you use the word I feel like or this is like, the word like is often trigger for the use of a metaphor. So ask yourself a more empowering question. Ask what would be a better metaphor? What would be the more empowering way of thinking this? What else is this like? For example, if I were to ask you what life means to you, or what your metaphor for life is, you might say, life is a constant battle or life is a war. If you were to adopt this metaphor, you would begin to adopt a series of beliefs that come with it.
Like the example of the atom and the solar system, you would begin to conduct your behavior based on a set of unconscious beliefs that are carried within this metaphor. And to be honest, ये metaphors जो होते हैं ये हमारे belief systems होते हैं. These are the reasons of whatever we are manifesting in our lives. Whatever is happening in our life is a manifestation. A whole set of rules, ideas, and preconceived notions accompany any metaphor you adopt. So, if you believe life is a war, how does that color your perception of life? You might say it's tough, it's end with death, or it's going to be against everyone else, me against everybody else, or it's dog eat dogs. Or if life is really a battle, then maybe I'm going to get hurt. All these filters impact your unconscious beliefs about people, possibilities, work, effort, and life itself. This metaphor will affect your decisions about how you think, how you feel, and what to do. It will shape your actions and therefore your destiny. Well, all right. What is your takeaway from what we have read, sir? Try to change the metaphors when you're using the word life is like, or this is like, my day is like, evening was like, parents are like. So it can be that when you're using like, you are mostly, he's saying you're mostly trying to use negative metaphor over there after a like statement. So when you're using, you can either decrease it to little lesser intensity, or you can completely use the empowering one. Here he was I mostly love the talking. concept of, asking ourselves questions. Is it Yeah, actually the way we are saying it, or it's not? Because I think that is in itself going to bring a massive shift. yeah. So the one who is feeling that way, it's not very easy for them to suddenly drift into, but they can make a practice. Because I remember the uh, times in the I mean to say, when I was some years ago, I was chatting with people online, and that time I used to feel life is beautiful and life is awesome, every good thing about me. There were no issues. There must have been things, but I always took it some. I have to think about it. How I took. मैंने तो उनसे बात करी, and there were some people who were in their 30s or 40s. I was in my 20s, so there was difference. I was like, ये क्या मतलब क्या ऑनलाइन में ये मेरे को क्या समझा रही हैं कुछ. सीनियर थी, someone was there who became my friend. She was in Malaysia, and she was talking about her life, in-laws and everything, see how things happen. And I was like, होता है ना आप नए वो. And then for me, I was always in this theory, everything is good. So Yes. I can again, yeah. So It think is about as that. simple as this. If you believe that people are selfish, Something you will was there between some and experience your lucky. exp your experience will reflect that belief again and again. आपके लाइफ की जिंदगी में लोग ही वैसे आएंगे जो सेल्फिश ही दिखेंगे आप. इवन बिकॉज आप वो वाला स्पेक्स पहन लेते हो, आप वो वाला लेंस पहन लेते हो कि आपको दुनिया सेल्फिश ही दिखती है. They tried so hard that Komal is doing something wrong here. She doesn't know the reality of life. जैसे आपके बच्चों को अभी होगा ना कि वो तो फिर भी बोल देते हैं कि मम्मा बाहर कई बार लोग अच्छे नहीं है ना. बट आई वॉज इन द इम्प्रेशन कि नहीं सब अच्छा ही है. पता नहीं वो डीप बिठाया हुआ था, और आई हैड दो. बट नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट आई सी सो मेनी, मतलब नहीं नहीं नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, वो नेगेटिव हुआ in childhood. How I am digging those things, and why. Maybe because I came into healing and such stuff from 10 to 12 years. But अब डिग करना क्यों शुरू कर देते if I reflect. So अच्छा better ये than बताओ, that. व्हाट इज लव टू यू?
Because now, see, I have read this page, it will immediately be blossom or flowering or something, because even ChatGPT is helping me to give only awesome words. So my dictionary vocabulary is changing, even if I'm using it in a fun way. But वो बहुत अच्छे वर्ड्स मेरे को आ रहे हैं. आई एम नॉट टू श्योर कि सबके साथ होते हैं. बहुत इंकरेजिंग वर्ड्स. आई हैव यूज्ड द थीम. देयर इज अ थीम इन चैट जीपीटी. एनकरेजिंग कभी लगाया था. आई एम नॉट टू श्योर वो इसलिए है या वैसे ही है. बट वो बहुत सुंदर. मुझे बोल रहे हैं तुम अभी सीड बन रही हो, फिर तुम बगीचा बनोगी. मैंने कहा अच्छा. मम्मा को बता रही हूँ, मम्मा देखो कैसे फ्लैटर हो रहा है. तो मतलब ही इट वाज टेलिंग दैट एस्ट्रोलॉजी ऐप ही. What has been love to you? व्हाट हैज बीन और व्हाट इज. Let's see what has been love to you, because then we'll see that that will become little difficult, so I, yeah. Okay, I'll still be on this page. I'll still be on this line. hmm, love Love is is. about caring, expression, where you can see beyond yourself. And love is about uh, thinking about someone, caring, uh, taking them as their own, as your own. What is And love to you now? love to me is beautiful thing, a beautiful expression of life. Um, Amazing. where, yeah. Madhulika, what is love to you? Hi, Karishma. Good afternoon, Komal. Good Love, afternoon. love to me is power. Wow. That gives me power to run my day, my weeks, my months, my years, and my life. That's amazing. Amazing. Um, I have heard people saying that love is sacrifice. And what do they end up saying and doing? They keep on sacrificing. They start feeling exhausted in their love life. And things get exhausted in the relationship as well. Whichever, be it a spouse relationship, be it a mother-father relationship, be it in-laws, be it kids, जिसके साथ भी. So I think we have to see. I love the way, Madhulika has used love is power. Love should be very expansive. So power Like, for me Komal sometimes is said. not power. I don't resonate ever with, so I will not. For me, it is different. So just like, Komal, you said hmm. that love can be like a मेरे लिए garden. पावर वो हो जाती है थ्योरी वाली. अथॉरिटी. मैं फटाफट पावर को उससे लिंक कर जाती हूँ. सो It's okay. आई विल. You have your own vocabulary. You have your own meanings to everything. For Madhulika, love is power because it expands her. Whatever That is power. expands you should be the word. Yes, Madhulika, please feel free to share. So yesterday night, I had my couple of sessions in the evening, but one of my friend texted me, क्या मैं आ सकती हूँ? And it is not her tone at all. It is not her tone at all. वो उनमें से है कि क्या कर रही है? मैं आ रही हूँ. चल छोड़ दे. जो है, छोड़. But I could read her that yes, when she texted me, क्या मैं आ सकती हूँ? I said, okay, please come. मैंने अपने जो शाम के सेशंस थे वो सब पॉज पे डाले, कैंसिल किए. एंड शी शी विजिटेड मी एट 8 p.m. and she left by 12:30. तो वो डॉक्टर के पास से आ रही थी अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाई लेके, और यहाँ से मेरे साथ बैठ के, और वो चली गई कि कोई नहीं यार, अब अगले हफ्ते से दवाई लेनी शुरू करूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो अभी रख लेती हूँ ऐसे ही. पैसे खराब हो गए डॉक्टर के पास जाके. दैट इज लव. Actually, that is power. That you give strength. Power is what? Power is strength. You give strength someone to face their difficult times with energy, with vision, with positivity.
That is what power to me is. Power to me is not authoritative or controlling someone. No, if you can control yourself, then it is power. If you can control your emotions, then it is power. You give, किसी को आप बोल दो, किसी का कोई लॉस हुआ है या कुछ है, अरे मैं समझ सकती हूँ तेरी बात, या आई कैन फील यू। किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो अरे ये सब आता जाता रहता है, ठीक हो जाएगा, तेरे पास इतना तो है, मतलब क्या हो गया, कोई बात नहीं, ये तो हम ये करेंगे फिर कमा लेंगे, या कुछ भी है, मतलब यू गिव देम अ विजन। अगर मान लो इट कुड बी माई हस्बैंड ऑल्सो, ही लॉस्ट हिज जॉब 3 years, 4 years back, and he was CEO of the company, and all of a sudden he had nothing to do. I said, तो क्या हो गया यार, ये सब तुम्हारा ही बनाया हुआ है, it's okay, we'll again find some way out. That is power. When you don't demean someone and you make them feel worthy, that is power. Actually, to make someone feel valuable, make someone feel worthy, make someone feel powerful, that yes, you have done this. तो उसने अपना जो बिजनेस खड़ा किया है, मैंने कहा यार तूने कितने धक्के खा खा के अपना बिजनेस खड़ा किया है, आज तू यहाँ तक पहुंच गई है, तू क्यों पीछे मुड़ के देखेगी, तेरे को क्या हो गया। मैंने कहा ऐसा ऐसा क्या सोच रही है, इट्स अ वे अहेड, इट्स जस्ट अ माइलस्टोन व्हाट यू हैव अचीव्ड, और ये वो। तो दैट इज पावर, आई थिंक। दैट इज लव, when you bring someone's best version out of themselves, that is love. सब में सब कुछ है, सब में झूठ भी है, सच भी है, बट सब में दुख भी है, सुख भी है, प्यार भी है, स्ट्रेंथ भी है, और लोज वाले टाइम्स भी है, बट इफ यू कैन ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट पर्सन आउट, दैट इज पावर, I love दैट इज। I love that. Bringing the best version of anybody. Yes, I really needed someone who can bring the best version out of myself, because I know what my capabilities are. But if someone will always, वो ताने मारना, डाउट करना, या ये करना वो करना, ये सब, इन सब में मैं 20-22 साल उलझी रही। I could not bring out my best version. But yes, I knew that it is in me, and let me, okay, then I thought, fine, कोई और नहीं ले रहा, let me take the command. I will take the lead, and now I will lead the entire cohort. So that is love. I have a question here. When Karishma says we are manifesting, so ये 22 साल आपने manifest थोड़ी किए. So this sometimes I get perplexed इट्स about. नॉट कि मैंने मैनिफेस्ट नहीं किए, मैंने मैनिफेस्ट किए क्या, इट इज मैंने मैनिफेस्ट क्यों नहीं किया अच्छा उन 22 सालों में। आई वॉज नॉट अवेयर इनफ कि मैं ये दो कर सकती हूँ। हाँ वो ठीक है, but the people you cannot change. Those people who were doing those things, They they are still the same, they are doing the same, it is just how much I will take. they Komal, they have not changed, एक ग्राम भी इधर से उधर नहीं हुआ है, it is still the same, they are complete. still the same. They are more frustrated that why she is not being affected now. Mhm. So Yeah, see, it is not my responsibility to please them, it is my responsibility to first to handle myself and my family first, राइट। और उस फैमिली में वो आते जाएंगे जो मेरे लिए अच्छा सोचते रहेंगे, whosoever it is, I think these if it is answers my। which are asked, these are not very easy. जो हम कहते हैं कि हमें पता ही लग जाए कि हमने मैनिफेस्ट किया था या नहीं किया था, ये कार्मिक लेसन्स हैं, ये कैसे मिला या क्यों हुआ, दीज आर नॉट इजी जब तक हम बहुत सारी मतलब बहुत ऊपर वाली स्टेज पे नहीं है, लाइक अ सेंटली जो बहुत प्रेयर करके उनको ही वो आंसर्स मिलते होंगे। व्हेन अबव लाइफ जाते हो आप, समटाइम्स इवन आफ्टर डेथ दे विल गेट दोज आंसर्स जो आगे लाइफ होती है। सो मेरे वो वाले किसको पता क्वेश्चन। है, यू वांट टू गो थ्रू योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। Maybe some people do get that. I know, but I've never tried. Yeah. क्या करना है पहले, इस जन्म की तो अपने वो पूरे कर लो, आई You मीन। know, Madhulika, I'm even doing something related to past life wala, which is called Akashic record reading. Uska course I'm already doing with a teacher. And what it is about, we ourselves sit in meditation जो आ गया कि जो पिछले आपको जन्म की ना ईएमआई मिलेंगी तेरे को देने के लिए, जो अभी भी भरनी है, मैं तो देखू ही ना उस बैंक अकाउंट में जाके। मैं इस जन्म की पूरी कर लूं। लेट मी कंप्लीट माय टास्क ओवर हियर। वन ऑफ माय वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड,
he does past life regression. He has asked me so many times, तू करा ले, तू करा ले. अब मैंने कहा तू जा अपना काम कर. मैंने कहा तू जाके अपनी बीवी का कर, मेरे को नहीं कराना तेरे से past life regression. Why I will dig up the hole? I mean, there must be some shit also, for sure. That is why I'm here. That is why I'm living this life. जब जो चीज तो ओपन होनी है, if पता है क्या? you See, he told me the only solution to everything is to let things go. So why not to let things go without knowing? What will I get? Isn't it will be more difficult for me to know the things and then I'll let go? कि you इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, then I'll let go. It's better let it go. मतलब मेरा तो ये सोचना है कि yeah, ठीक है. So love is that to me. Love is power to me. Seriously, it is always being because see, when you trust someone, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, दैट मीन्स यू मेक द अदर पर्सन फील पावरफुल. आपका हस्बैंड आपको बोले गो वट ये एवर यू वांट ये टू डू यू डू. नर्चरिंग वाला हो जाता है, मदरली लव वाला आई ट्रस्ट यू. नर्चरिंग। इट इज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट. आप अपने बच्चे को बोलो आई ट्रस्ट यू, तेरे को जो करना है तू कर. उसमें क्या कॉन्फिडेंस आएगा? नो. आप किसी को रेस्पेक्ट करते हो, दैट इज यू मेक देम फील पावरफुल. You या know, you respect someone. So अप्रिशिएट yeah, you appreciate someone. That is love to me. When you make the other person feel powerful, that is what love to me is. Otherwise, तो फिर तो वो प्यार व्यार ही रह जाता है. बैठ के सोच रहे हैं उसने खाना खाया नहीं खाया, उसने किया नहीं किया. हाँ. Krishna will tell now. And I seriously see my husband is not here. He is in Bombay, है ना? तो अगर if his maid doesn't come, so nobody cooks for him. पहले मेरे को बुरा लगता था, अभी मेरे को नहीं लगता. अभी मेरे को लगता है यार इट्स गुड. मैं तो उसको बोलती हूँ राजीव इट इज गुड फॉर यू. अच्छा है तुमने एक दिन खाना नहीं खाया, सेहत के लिए इट इज गुड. हाँ, हम नहीं क्या व्रत रखते. मतलब व्रत रखना तो हमारे हिंदू धर्म में तो अच्छा माना गया है स्वास्थ्य के लिए. तो यही बहाना सही. वरना तो आदमी में इतनी वो ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है कि वो व्रत रखे. तो मेरे को तो ठीक लगता है अभी. आई एम ओके विद दैट. आई फील हैप्पी जिस दिन नहीं आती उसकी काम वाली. Nice, huh? You हाँ. have a different perspective. सो हाउ विल आई कोप अप विद थिंग्स ना. मतलब आई हैव टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन दैट. ये You अच्छा है. अच्छा ये बताओ, what is one global metaphor that you have been unconsciously living by? उसको चेंज करते हैं. ग्लोबल मेटाफॉर. आई जस्ट गेव अ स्पीच ऑन दिस ओनली करिश्मा. नहीं, आप तो सीरियसली. अच्छे वाला बता रहे हो ना. देयर वुड बी समथिंग दैट वुड बी बैड एज वेल दैट वी हाँ, नीड टू बैड ही बता चेंज. रही हूँ. बैड ही बता रही हूँ. बैड हमारा जो इंडिया का एक मेटाफॉर है जो हम बचपन से सुन रहे हैं. खाली पेट नहीं जाएगा पति मेरा. दैट इज नहीं. खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. सी, हम्म. new thing. आफ्टर बीइंग इट इज वी आर 1.5 बिलियन, राइट. और हमारे से 1/10 भी जिस कंट्री के नहीं है उस कंट्री के पास 17 गोल्ड मेडल आते हैं और हमारे पास 3 भी नहीं आते ओलंपिक्स में. खेलोगे इट कुछ। इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मेटाफॉर. हम लोग जो फिजिकल फिटनेस से दूर हैं, हमारे यहाँ की जनरेशन, क्योंकि हम गेम्स नहीं खेलते, बचपन में नहीं खेलते, तो हम में वो एक झिझक रहती है. उस वजह से हम बड़े होकर भी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते. तो ये जो हम हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट मेटाफॉर. और स्पोर्ट्स कितनी सारी बाकी चीजें हमें सिखाती है. जैसे कोलैबोरेशन करना, जैसे आपको हाँ. टीम टीम बिल्डिंग करना. स्पिरिट. सो ये भी चीजें हम लोगों में कम रही हैं. दैट इज व्हाई वी फेस सो मच डिफिकल्टी. इसीलिए हमारे पेरेंट्स इन लॉज भी हमें स्पेस नहीं दे पाते. दे डोंट नो हाउ टू एडजस्ट बिकॉज दे हैव नेवर प्लेड अ गेम. दे डोंट नो हाउ टू मेक अ टीम. Even तो in games I've दिस seen इज वन competition मेटाफॉर. happening. कंपटीशन होने लग जाता है गेम, मतलब घर की कार्ड गेम्स में. इन माय फैमिली आई हैव सीन कन्फ्लिक्ट. तो मैं ना उसमें भी प्रेयर लगा देती हूँ कि कहीं कन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए. सो दैट एनर्जी, बिकॉज वो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लेवल पे siblings when siblings are praying, not playing a game, card games, so that was happening. So then last जब अब आते हैं तो वेकेशन पे, तो then I was putting some prayers, Vaheguru chant or something. Then atmosphere was So literally calm. Madhulika, what are you going to shift this metaphor into now?
द खेलोगे। वन मेटाफॉर विच आई एम वर्किंग ऑन, जिसपे मैंने स्पीच नहीं दी, दैट इज बड़ों की इज्जत करो, एंड यू नो इट, व्हाट आई एम शिफ्टिंग इट इनटू, व्हाट इट। सबकी इज्जत करो। ओ। दैट इज, हाँ, दैट इज मोटो ऑफ माई लाइफ, वो तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं हूँ। नहीं, ये पर हाँ, ये इसका क्या सबके करोगे? साथ। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, का क्या करोगे? इसका ये करेंगे कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे साहब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। हाउ डू यू। Yes. Whatever you choose to do it with full conviction. हाँ, What about you, Komal? What is that one disempowering metaphor that you keep using? Not for self, but I always consider population as something. Why it is like this? Strange enough. Like बात भी हो गई फिर पॉपुलेशन पे, मतलब इतनी पॉपुलेशन है ही क्यों, मुझे ऐसा मतलब समथिंग आई डोंट लाइक इट। आई लव पेरिस और वैसी जगह जहाँ पे ओह, पॉपुलेशन। पेरिस में आपने पॉपुलेशन देखी नहीं है अभी। पेरिस ट्रैफिक इज एग्जैक्टली सेम लाइक दिल्ली नो एंड इट्स बॉम्बे इट ट्रैफिक। इट हैज एरिया आल्सो दैट मच, मतलब कहाँ पॉपुलेशन है वहां पर, पेरिस कम है। इज बैड, आई हैव बीन देयर। आई यू नो, वाज बट रोड्स कोमल, आर एम्प्टी, हमारे रोड्स आर यहाँ एम्प्टी। हमारे यहाँ की इकोनॉमी इसीलिए चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन इतनी है, अपनी इकोनॉमी ठप होएगी नहीं, अपने यहाँ रिसेशन आएगा ही नहीं। I'm talking about whole of Europe. If you drop Paris, मतलब मुझे तो ऐसा फील होता था कि रोड्स एम्प्टी हैं, पोल्यूटेड भी नहीं है, पॉपुलेटेड भी नहीं है उस वे में। पॉल्यूशन नहीं है, पॉपुलेटेड तो है। नो आई आई एम दैट पर्सन, फिर मैं लॉजिक में चले जाऊंगी। आई जस्ट चेक आफ्टर द सेशन देन। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया की ज्यादा है ना। ऑफ कोर्स, so इंडिया इज अ बिगर कंट्री, पेरिस इज कितना, इतना सा तो पेरिस है हाँ, वर्ल्ड के फिर मैप भी में। कंपैरेटिवली पर डेंसिटी हमारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। पर दैट स्क्वायर जो भी कहेंगे स्क्वायर मीटर, है ना, तो इवन एरिया उतना नहीं है। रशिया एंड सम कंट्रीज हैव लॉट ऑफ एरिया, और जहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, एरिया बहुत ज्यादा है कुछ कंट्रीज का जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। बट हाँ, उनकी अलग डिसएडवांटेजेस होंगी कि उनको लोग नहीं मिलेंगे, फिर आइसोलेशन हो सकता है, इफ यू वांट टू थिंक दैट वे, दैट लाइन ऑफ थॉट, कि आइसोलेटेड अंदर अंदर है, मे बी दे वर इनसाइड हाउस। when my family and we were there, I loved कि empty roads हैं basically। हाँ, फिर अच्छा मैं ये बोलती हूँ कि मैन क्यों है रोड पे, गर्ल्स क्यों नहीं है। my point was this, कहाँ पर? on general, Indian roads, we can see 80% men are outside, women are not there. So I used to feel insecure. Maybe because of that, this thought must be there. I want, मतलब मेरे को तो 50-50. Vietnam has a lot of girls doing business, and shops are there. So in that sense also, I was like, wow, that। So what are you going to shift in it now? आगे इसका क्या सोचूं, पॉजिटिव सोचूं। हाँ। uh, जब ये निर्भया हुआ था ना, एट दैट टाइम अ स्लोगन केम, एट दैट टाइम देयर वाज अ शिफ्ट इन द नरेटिव, दैट वी ऑलवेज से आवर डॉटर्स कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, है ना। सो व्हाई डोंट वी से 8 बजे के बाद ही सारी लड़कियां बाहर निकलो। बाहर हो जाओ तो हाँ, आई वुड लव कि जहाँ वुमेन बाहर हो। मतलब वाई वुमेन आर इनसाइड, अब तो नहीं है इतना, बट नॉर्मली फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम सीइंग ना, मेन 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 मेन, मैंने कहा मैन दूर हो जाओ, वुमेन आ जाओ थोड़े से। somehow it was there। um, कोई और मेटाफर ढूंढती हूँ नहीं तो, बट इट कैन बी, some people have that intelligence, like after study you get successful, only after you study, वही आ गया जैसे पहले था नवाब वाला, that you get more success if you are scoring high, कि scoring is equal to success, in jobs। And now? You can be, success depends on not scoring, but on your wisdom you gain or skills you I develop। think success depends on your conviction towards the topic that you are moving forward with. Yeah,
क्योंकि कन्विक्शन होगी तो आप उसके अंदर और एक्सेल करोगे. यू विल बी Because a we can lifelong see learner for that example subject. भी है, many business women and men, they are not too highly educated. तो ये wrong metaphor है जो चूज किया होगा, कि पढ़ के तो सैलरीड क्लास बन रहे हैं. Businesses, I'm not saying businessmen are not educated, but we can see lot, they don't need education that much. 10th grade क्लियर किया होता है, फिर भी they are super successful and earning a lot, and millionaires भी होंगे. Yeah. So that breaks itself, कि uh, you can become entrepreneur plus have, yeah, education is not linked to having money. True. It is required, but scoring is, mind is different than education scores जो है. मुझे तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला आपकी कुंडली दिखा दी, आप इंटेलिजेंट बहुत हो. तो मैंने कहा स्कोर्स तो नहीं है, मेरे स्कोर्स एवरेज रहे. तो देन ही वाज लाइक, क्या माइंडसेट, इंडियन माइंडसेट, वो मुझे ऐसे बोल रहा है कि इंडियन माइंडसेट, कि व्हाट इज दिस, कि स्कोर्स का क्या लेना देना इस चीज से. Yeah. I would love for Can you be, to and choose. also you can be successful at any age, like you have seen. Not that you need that pattern to follow, which I have been seeing in my brother and sister siblings. मेरे को शुरू से वही हुआ ना कि अच्छा वो तो toppers थे, how will you succeed? So everybody has their own journey. Plus, success can come at any age. Very well said. So what is that one word that I would love for you to, pick one metaphor that you're going to choose today and say it loud with conviction. Negative metaphor? अरे हमको नेगेटिव मेटाफोर में लेके जाना अच्छा, है. मुझे लगा फिर वही एक्सरसाइज कर रहे हैं, we are changing negative into positive one. A Okay, no. positive. What is the metaphor that you're going to use hereafter? Okay. What just came up is, we can try to say life is so easy. This is looks like affirmation, but it came up. Instead of Yes, always saying life is a blessing. struggles, sacrifice, battle, ground, or so many things. Life is so easy. And like, Can have more मुझे तो of. बहुत अच्छा लगता है. I normally say that life is a blessing. Life is a blessing. All right. Anything else that any of you would like to share before we close today's session? Madhulika, Yes, what? Sorry, I missed it. would you like to share anything before we close today's session? Positive metaphor. Regarding metaphors, Today's session, yes. see, we live by so many metaphors that girls should be beautiful. We don't, relate girls with intelligence, or power or authoritative figure. We relate, if there is a girl, she should be beautiful. This is one. I told you ना, बीच में मेरे को चिढ़ हो गई थी. कोई मुझे ब्यूटीफुल बोलता था, मैं कहती थी यहाँ पे भी कुछ है, इसको भी देख लो कोई. So it's a very this thing which really should be changed, that girls is not equal to beautiful. Being a female does not mean that one should And be. that actually starts with the compliments we sitting in this room start giving to our daughters, our friends, our surrounding Why world. not say beauty with brains? Because then we are adding beauty and brains also. Not Then let us say brains with beauty. Let us prioritize the one that should be prioritized first. Oh, wow, you are strong.
You have six pack abs. रेजिलियंट जैसे बोल देते हैं, बट वहां पे ये आ जाएगा ना कि वाई हैव टू बी रेजिलियंट. I mean, yeah, so this is one metaphor which I strongly believe that should be changed. And then I like this metaphor as well. बड़ों की इज्जत क्यों करो, सबकी इज्जत. सबकी इज्जत करो. ये तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, यूज होता है. जो ससुराल जाते समय बोलो जी बड़ों की इज्जत करना. यस. और अगर छोटे देवर हो और छोटी नंद छोटों हो, को प्यार करना, बड़ों की इज्जत करना. हाँ, बस. Love to the younger ones. When we write the letter, we used to write letters in the school. Respect, give my namaskar to the elders in the family and love to the kids. बहुत सारे ऐसे हमारे बिलीव्स हैं जो बिलीफ सिस्टम से इतने ट्यून्ड अप हैं हम लोग, that whether you cook or you don't cook, whether you have a cook, whether you have a chef at home, whether you have a whatever, but ultimately responsibility is again lies in the on the shoulders of female. है ना. रॉ मटेरियल क्या आएगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बच्चा स्कूल गया नहीं गया, चाहे ड्राइवर है भेजने के लिए, कौन सी क्लास में जाएगा, कौन सा क्या रहेगा. अगेन द एंटायर थिंग इज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको एक सपोर्ट सिस्टम, भले ही आपके पास कितना भी अलीट क्यों ना हो, या आप अपनी स्कूटी पे बिठा के क्यों नहीं लेके जा रहे हो, या आपने अपने कॉल में पॉज लगा के आप छोड़ने जा रहे हो बच्चे को उसकी क्रिकेट क्लास पे और लेने जा रहे हो, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ women. That is a strong belief. Strong belief, one of the strong belief that how many of us being females take responsibility of our finances. हस्बैंड ने जहां बोला चेक पे साइन कर दिया, खाली उसने, पेपर्स पे साइन कर देते हैं. हाँ, उसने बोला इन्वेस्ट करने के लिए कर दिया. इट्स नॉट दैट कि हम उन पे विश्वास ना करें, बट इट इज हम अथॉरिटी क्यों नहीं लेते, बिकॉज इट इज बीइंग थॉट ऑफ कि हमारा माइंडसेट है कि ये उसी का डिपार्टमेंट है. हाउ कैन वी टेक दैट बैक? अगर वो एक दे काम ही करो, दे. अपने घर में किसी से आज 5 पेपर्स पे, खाली पेपर्स पे साइन करो, जाओ. सी व्हाट डू दे से. वही तो, दिस हैज बीन माय, आई डोंट, फिर वही फाइट वर्ड नहीं आना चाहिए, बिकॉज माइल्डली व्हाट वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ फाइट. कंफ्लिक्ट ऑफ This कंफ्लिक्ट ऑफ has been आइडियाज. my yeah, thing going on, where I have been, see कितने words metaphor अब आ रहे हैं ना, struggling, fight. I have been into that loop of why you are the authority only, why we are not the authority, women are not the authority. That has been my I'm not getting words, easy words for this. गुड. दैट इज Hmm. अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन, राइट? कितना सोच के बोलेगी ना कोमल. बट नॉट इन दिस रूम ओनली, वी हैव टू practice it outside this room as well. ये नहीं कि ये भैया बंद हुआ डिब्बा तो बगल की उसके बाद जगह बाहर क्या आएगा, जाके हम देखो जो कितना मर्जी बोल easily. सकते हैं. अब इजी हो गया. करिश्मा Hmm. नहीं है या मधुलिका नहीं है, नहीं. Yeah, definitely. या Hmm. बिकॉज वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग दिस. इट इज नॉट दैट मैं हमेशा अच्छे वर्ड्स यूज करती हूँ, मैं भी गुस्सा होती हूँ, मैं भी गलत वर्ड्स यूज करती हूँ, मैं भी बुरा बोलती हूँ, मैं भी वो करती हूँ. Everything goes fine. Things are fine. The way Madhurika was saying that women को ही responsibility लेनी पड़ रही है. Kids and easily वो words में आता जा रहा होता है कि woman is responsible. और I was like, mom is okay with that. But child sees everything कि हो क्या रहा है. Authority कहाँ आ रही है, कैसे you are the always the one who wants बल्ले बल्ले. ये अच्छा था. गुड. लाइफ शुड बी बल्ले बल्ले. मतलब वुमेन को भी करो ना बल्ले बल्ले, बस इतना ही. कोमल बोलेगी, कोमल हुई हो जाएगी बल्ले बल्ले. हम्म. बल्ले बल्ले इज नॉट हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड ना, टू वही वन. हमारी एनर्जी में है, अगर हम अपनी और इतनी चेंज कर लेंगे धीरे धीरे ही सही. बिकॉज आई एम होपफुल दैट विल हैपन. कोई टाइम लग रहा होगा, बट थिंग्स And then आर. life is not dependent on only one aspect of life. Life has beautiful colors: pink, यस. purple, green, black, blue, orange, yellow. सब है. एक ही कलर के पीछे क्यों हम?
Exactly. मेरे को तो पिंकी ड्रेस चाहिए, पिंकी ड्रेस चाहिए। अरे कहीं तब तक येलो एंजॉय कर लो, ऑरेंज एंजॉय कर लो, ब्लू हाँ, एंजॉय कर लो। करियर एस्पेक्ट पे ग्रो करो, हर एस्पेक्ट पे ग्रो करो, यस, चलो एंड ठीक है, गेट योर ओन थैंक बल्ले यू। बल्ले, गेट योर ओन हैव बल्ले अ बले बले डे। कम्युनिटी। टेक मधुलिका केयर। अपनी शक्ल तो दिखा दो, 2 दिन 3 दिन बाद मिले हैं। I'm I'm in the kitchen, so that's why I think I ओके, have blocked this. देखो आपकी तो किचन भी नहीं दिखती आजकल, आपका वाइट वाइट बैकग्राउंड भी दिखता है। वी कांट सी यू ओनली। किचन किचन का अच्छा, बैकग्राउंड नहीं आया है ना? गुड ना। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस you all, have a bale day, and see you tonight at 10 p.m. and then tomorrow at 1:15 p.m. Perfect. ठीक, Bye-bye. बाय बाय। God bless you, bye bye. 222 एंजल नंबर। बाय, हैव अ